Jai Hind everyone. I have joined this Sathi 4.0 Cadetians batch on 8th December 2025. The 30 days journey was really good. It helped me in improving myself, self-introspecting. It started with the officer intelligence rating test. We did two practice tests and also sir assessed our checked each questions and gave the rating, and that helped us analyze our mistakes, that where are we currently lacking and how can we improve in that. Basically we were not able to complete all the questions. So now talking about the PPDT task, there were around 3 to 4 practice of the PPDT, and the most important thing was that most of us were lagging in the observation skills, due to which we were not making good stories or not relevant stories to the picture. And also some of us were not following the 2 plus 8 plus 2 rule, and that was not making the good framing of the stories. So by doing practice in this batch, it helped me to frame the stories with the 2 plus 8 plus 2 rule, and it also helped me in observing the good pictures very goodly. And now talking about the personal interview, a personal interview was I gave one interview and it was really good, and I'll be giving one more interview in the future. It helped me in the self introspection. I got to know my weakness, and also got the advice from the sir to improve on the military awareness, and उससे पता चला कि कितना वाकई हम पानी में हैं. So now talking about the, and also sir has provided a PDF of the interview questions, and that PDF consists of mostly all type of questions from family, friends, academics, everything. It covers CIQs, it covers defense affairs, everything. And also he has provided service related PDF related to Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy. That also helped me and knowing the current status about the Indian Air Force and the other services. Now coming to the psychology test, there were two dossier sets practiced. We did live testing, and also we practiced two sets for the TAT, WAT, and SRT. And sir used to check each sentence, each story one by one in the practice sets also. And talking about the dossier, you will get the weekly, you will get the dossier report every week, and that will help you in analyzing your mistake, where you are lacking, what kind of stories you are making, and if it is completely rubbish, if it is good one, sir will give these kind of reviews to you. So this was and also one more incident, that like in TAT stories, rather than made me understand that how to reduce the impact of the incident, that like it is better to write struggling in water rather than drowning. So size reduced, because the image size was reduced, so it built real time pressure and we were able to perform better. And now talking about the GTO task, starting from the group discussions, we did 2 to 3 practice sessions, and the voices of the circle helped me a lot in improving in the group discussions, giving the good points. And now sir taught us to be cooperative and not dominative. And now coming to the group planning exercise, we had 3 practice sessions for the GPE, and sir focused more on the effective solutions. Everyone can make the solution. Everyone have the almost the same priorities, but the solution varies person to person, and that effectiveness is very much required in the GPE solution. And micro solutions, and sir also tell the hidden resources such as the forest guards that are available in the forest, the man at the railway crossings between the road and the railway stations, that really help us introspect better for the GPE solutions. Now coming to the outdoor task like PGT, SGT, FGT, command task, it is not possible to do practical application of the Fatta Balli Rassi in online task. But yes, you can get as much ideas as possible on one particular structure in this batch. Sir will try to change the rules. If the distance is 4 feet, then he'll increase to 5 feet, 6 feet, 7 feet, up to 15, 16 feet. And he'll make one solution in each situations. So that really helps you become resourceful, that brings maximum output in the minimum resource. Now talking about the lecture 8, we had around 4 to 5 lecture 8 practice sessions. One was
like known, and other four lecture sessions were unknown. So that helped us build the real time pressure, how we can perform in the real SSB when the lecture rate would be given for 3 minutes. And sir emphasized on three things: how to deliver the lecture rate, that is the confidence. It looks your confidence. It also looks your delivery, that is your uh, presentation skills, how you are, or do you have the knowledge or not. Your content and your content briefing, how you are able to divide the content in the four parts: introduction, why it is in news, introduction, significance, challenges, and way forward, and then conclusion. And at last, in lecturate also, they also look how you are able to attract the group. That is why, including why this topic is in news, or giving some quotations. Now talking about GOR and individual obstacles, sir basically conducted one live class to explain the strategies that are best for uh, a particular person. Like for me, like I'm not that physically fit, or I'm not that tall, so I can, rather than being at the bottom position and pushing the other person, I can go up and I can pull other persons on the single wall or double wall in the group obstacle race. So the personalized strategies really helped me. And in individual obstacles, we got to know how we should approach the individual obstacles. In the starting, we should approach the tougher ones so that we have good energy and stamina. And overall, the good we had good guidance and practice sessions, and it was very interactive. Sir used to conduct also current affairs sessions every day, starting before starting the class. That helped me personally in developing the habit of reading newspaper and reading the content he used to send on the telegram channels. He also used to share some Bharat Geoscope PDFs, critical observations, defense affairs, and protagonist roles. And as I said, in the Indian Air Force PDFs and interview PDFs. Thank you. Jai Hind everyone. Today I'm going to give the feedback of this Cadet Sathi 3.0 batch. I will say these 30 days were one of the most productive days of this year for me. तो अगर मैं इस बैच की बात करूँ तो इस बैच में SSB के हर एक टेस्ट को सर ने बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर किया था. सर सबसे पहले हमें हर एक टेस्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवाते थे. उसके बाद उस टेस्ट का लाइव कंडक्शन करवाते थे, और उसके बाद हम परफॉर्म करते थे, और हमें उसका इंडिविजुअल हर एक टेस्ट का फीडबैक मिलता था. तो सबसे पहले अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूँ तो उसमें OIR का सर ने हमें लाइव कंडक्शन करवाया था. उसके बाद आता है PPDT. तो PPDT तो सर ने हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया था. सर रोज़ काफ़ी बार सर PPDT सेशंस कंडक्ट करवाते थे. उसमें सर सबसे पहले कंडक्ट करवाते थे. उसके बाद हमको इंडिविजुअली फीडबैक हमारी स्टोरी का, हमारे नरेशन का, और फिर उसमें हमारे ग्रुप डिस्कशन सबका अलग से फीडबैक प्रोवाइड करवाते थे. तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता था इम्प्रूव करने में कि किस एरिया में हम लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके बाद अगर मैं फिर साइक की बात करूँ तो साइक के लिए सबसे पहले सर ने हमें हर एक टेस्ट को अलग से डिटेल में कवर किया था. फर्स्ट पहले रिकॉर्डेड वीडियो के ज़रिए, उसके बाद लाइव कंडक्शन करा के, उसके बाद सर हमें असाइनमेंट देते थे और हम कंप्लीट करते थे. उसके बाद सर हमारी हर एक PAT स्टोरी, हर एक वैट और हर एक SRT को लाइव क्लास में चेक करते थे. उसके बाद हमें बताते कि किस तरीके से हम उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. सर हमें बनी बनाई कोई चीज़ नहीं बताते कि आपको ऐसे लिखना है, बल्कि सर हमें हमारे ही रिस्पॉन्सेस को और बेटर बनाने में हेल्प करते थे. और फिर SD के लिए भी हमने प्रिपेयर किया था, और उसमें सर ने हमें हेल्प किया था कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके बाद फिर आता है इंटरव्यू के लिए सर हमारे 2 इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं. तो उसमें सर हमें इंटरव्यू के बाद अच्छे से कवर करते हैं कि किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. सर हमें डिटेल्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और उससे बाहर आई थिंक कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो इनफ है. उसके बाद फिर आता है GTO के लिए सर के जो 3D मॉडल्स थे विच दे वर द बेस्ट. आई थिंक वो 3D मॉडल्स हमें रियल
एकदम रियल लगते थे जब हम प्रैक्टिस करते थे, और उसमें हम आइडियाज़ देते थे, फिर सर उसमें और मॉड्यूलेशंस करते थे, तो उससे लाइक बहुत हेल्प होती थी नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने में। और उससे सर ने लाइक हमें हर एक स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। फिर जैसे मैं जीडी और लेक्चरेट की बात करूँ तो उसके लिए सर ने हमें लाइक वॉइसेस इन द सर्कल प्रोवाइड करा रखी थी। ऑल्सो सर हमें डिफेंस अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे बहुत हेल्प होती है उनमें लाइक। और सर जैसे रेगुलर क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले सर हमें हमेशा जैसे उस दिन का न्यूज़पेपर से कवर करवाते थे लाइक करंट अफेयर्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते थे हमारी प्रिपरेशन में। उसके बाद वॉइसेस इन द सर्कल, उसमें भी सर का कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प होती है लेक्चरेट और जीडी में प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद और सर के जो वीकली फीडबैक्स होते थे लाइक सर हमें हर एक टेस्ट से रिलेटेड एक तो हर एक वीक का अलग फीडबैक मिलता है, उसके बाद हर एक टेस्ट लाइक इंटरव्यू का अलग, साइक का अलग, हर एक टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें फीडबैक मिलता है। उससे हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प होती है और हम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। और सर ने हमारे 2 फुल डोज ईयर प्रैक्टिस करवाए थे, उससे लाइक हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम रियल एसएसबी में परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि सर लाइक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देते हैं बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक वो हार्ड हो जाता है। और फिर उसको जब हम कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि हम लाइक प्रैक्टिस के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी सर लाइक सर के जो रेगुलर सर हर एक टेस्ट से रिलेटेड असाइनमेंट देते थे, वो असाइनमेंट हमें हेल्प करते थे लाइक कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने में, और वो हमें टाइम से सबमिट करने होते थे। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था इस बैच के साथ, एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस बैच। अगर आप लाइक चाह रहे हो एसएसबी के हर एक टेस्ट को डिटेल में कवर करो, और उसके बाद आपको हर एक टेस्ट पे पर्सनलाइज्ड लाइक हर एक टेस्ट और पे हर एक टेस्ट पे अलग अच्छे से आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिले, तो उसके लिए आई थिंक इट्स द बेस्ट बैच अवेलेबल ऑनलाइन। सो वो, और अगर मैं खुद की बात करूँ तो लाइक जब मैंने इस बैच को ज्वाइन किया था तो आई वॉज अ लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट, बट ग्रेजुअली जब मैंने परफॉर्म किया इस बैच में तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। और अब जब मैं देखती हूँ तो लाइक आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट विद द इम्प्रूवमेंट्स दैट sir has told me to do, and with consistent practice I will be able to perform good in the SSB. So overall my experience was amazing with this batch, and I will highly recommend this batch. Thank you. Okay, good evening, everyone. So today uh, I'll tell you that what I learned from this batch. So basically, this batch was suggested by one of my friend who took the batch earlier, and I looked into the feedbacks, previous feedbacks, and then I took this batch, and I think this batch is affordable enough. And talking about what are the procedures, what we have done in our 30 days journey. So starting from the OIR, the first day was of OIR, where we practiced the OIR, and also we got to know where we lack. And talking about PPDT, it was not just about the practice; it was also about that how to perceive the picture correctly, and how to write the stories accordingly. And next thing was the site test. So all those tests were covered thoroughly, including the TATs, SRT, and WATs. And for WAT, we were given some PDFs. Some WAT Astra was given, which was very good for writing the WATs. I just uh, refer to that WAT Astra PDF. Then talking about SRTs were sir told us that writing all the SRTs is not right, not something which is more acceptable, but whatever you write, that should be correct, and that should relate with you. Then next is ST, self prescription. It was checked by sir, and also all the ST
improvements were told, and then two psych dossiers were conducted, and after that the GTO started. So in that GTO we conducted 2 3 GDs, also GPEs, how to write the structured form, how to write structured GP, and what are the things that we should cover in GP. Then talking about PCT, LCT, all the structures, the 3D structures, they were more good because watching only one structure, and we were able to get more like 3 to 4 ideas on just one structure with modifications. So that was something which I liked well, a lot, because doing it online also gave me a feeling that I was present there and I was doing the uh, GTO. And then came the lecture 8. I just understood that how the flow should be in a lecture 8. And yes, I missed some classes, but watching videos, the recorded lectures, they provided me insights, and all the doubts, they were personally cleared by sir. And finally, the day of conference was also discussed. And Join friends, today I would like to share the feedback about the Cadet Sati 3.0 SSB course. Honestly speaking, when I joined this course, I was not very sure what to expect. But slowly as the day passed, I realized the course was actually very useful and very well planned. For each and every test, Sir has planned it so well. He gives you content related to it. He also updates you on the general awareness, like what is happening daily and what is important from the SSB perspective. Sir was very active in the class and he was very sincere and serious about the teaching as well. It is clearly showed me in the session the way the session were conducted. Sometimes the session were long as well. Sometimes it's bits are tough for me as I'm a serving candidate, and the battery also of my phone used to drain, and sometimes it do get switched off. So guys, make sure that you have full battery and power bank with you as well. the the experience I felt after this course has shown me the weak parts where I must work on as well. The psychology section, the interview, the GTO, Sir has structured very well. Sir has used 3D models as well in order to teach you the outdoor activities of the GTO section. And the psych section as well, it is well designed. The way Sir has gave the content that Sir gave us related to the TAT, VAT, SRT, it's very valuable, and I have gained so much knowledge from it as well. So what would I say about the strongest part of the course was the feedback from Sir. The feedback was brutally honest and constructive. It is not just about pointing out mistake that you are like in this, you like in that, guys, but it is also telling us about how to improve. Through this feedback, I was able to understand my strength and also my weakness as well. And the weakness that I have, I'm still working on it. I wouldn't say that your weakness will go like a magic, but the best thing about is that I know my weakness and I'm working on it. Earlier I was not going where I was going wrong, like but after having this course I do got the understanding of how where I am doing wrong, how can I improve, and I have much more clarity. The content covered in those 30 days was very relevant to the SSB process. It was very practical based on the requirement of the SSB, not just a theory. Many small things that we usually ignore were explained in detail. Like whenever you do have a doubt, sir is very helpful and he would explain you in a very simple manner. And sir has always said that whenever we feel doubt, like sorry will be available for us anytime in order to clear our doubt. So that is the strongest part of this course as well. So as compared to the other courses that you may take, the feedback process may not be there, or whenever you have doubt, the assessor may not be there to clear it, but the sir is always there to clear your doubt. I feel that if I continue on practicing on the guidance that has sir guided me during the course with dedication and discipline, I would obviously improve, and it will definitely reflect in my performance as well. So
I would say that a result may not come immediately, but improvement will surely come step by step. Overall, this course has been very meaningful learning experience for me. The people I met, they were very nice as well in the during the course, and this course has given me direction and the confidence and the better understanding of the SSB process, and also where the place I like and how I can improve myself as well. I'm very grateful for sir that for sir time and effort that he has shown, the commitment that he has made, and the content that he shared. It is very valuable. And throughout these 30 days, it was a very roller coaster ride. I would say that it would obviously benefit you guys. So that's all from my side. Thank you. Jai Hind. I'm there to give the review for the Cadets Batch 30. The complete procedure of Cadets Sati 3 was a wonderful process, starting from the day one introduction to the conference. Every part was very clearly conducted and interactive too. The complete journey was genuine and wonderful. I had learned a lot, and at every step, it was very much clear what to do ahead. Sir gave a depth analysis of everything. The very requirement of everything is that before going to any test, you must know what exactly it is, what we need to do, and how to respond generously, and take the real test as it is required. So, this part was very much indulged in the process throughout the process, which gave us in-depth knowledge. Then coming to the voices in the circle, it is the Raman exactly. It enhances our knowledge and the keyframe structure of the mind. It also has all the key points that is to be covered for the group discussions and lectures too. The most amazing part of the course is that though it being online, it has fulfilled the very aspect which I think might lack in at the offline centers. For example, one-to-one response assessment, which is quite difficult at offline centers due to crowds of aspirants, has been duly covered over here. Also, the GTO sessions were very amazing. The assignments are the key developers in throughout the process. As we cover them, we overcome the hurdles which are going to come ahead, and also it boosts the knowledge too, as it itself takes us half part as we are done with the lectures. Then I was not able to be consistent at the very last stage of the course, but the complete process has in-depthly made and covered as per the schedule. The course is designed such that it will clear your concept first, and then according to you, you may go ahead with getting clarification at every step. That's it. Thank you. तो तो मैंने ये बैच तब ज्वाइन किया जब मतलब पहली बार सर से जुड़ा, और जब से सर का बैच वगैरह चालू हुआ था ना, तो पहले स्टूडेंट्स मतलब जो बैचेस के स्टूडेंट थे ना, उनका रिव्यू वगैरह देखा था यूट्यूब पे। तो फिर जैसे प्राइसेस वगैरह देखा तो बजट में था और क्वालिटी अच्छा था, तो उसी के चलते मैंने ये वाला बैच ज्वाइन किया था। और तो इसके बाद मतलब पीपीडीटी पे आते हैं, तो सर स्टार्टिंग करते हैं पीपीडीटी से। तो मतलब पहले काफ़ी प्रैक्टिस करवाते हैं स्टिमुलस कैसे पहचाने, या कैसे जीडी में पार्टिसिपेट करे, वो सब मतलब बता देते हैं, जो बेसिक मतलब क्रक्स रहता है पीपीडीटी का। उसके बाद सर 2-3 सेट ओआईआर के प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे मतलब आपका और ओआईआर बहुत अच्छा होता है, और कुछ टिप्स बताते हैं जिससे आप बहुत अच्छा ओआईआर में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो डाउट्स वगैरह रहते हैं वो सर हमेशा मतलब अपना वो टेलीग्राम आईडी देते हैं, वहाँ पे हमेशा आप पोस्ट कर सकते हैं उस, और कभी भी आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और सर का खास बात ये है कि वो आपके पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर देते हैं कुछ-कुछ। और उसके बाद सर जीके या करंट अफेयर्स से आपको अपडेटेड रखते हैं, जिसके चलते आपको जीडी वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलता है। वो काफ़ी मतलब अपने
कुछ बुक्स वगैरह जो या फिर जो कुछ प्रिपेयर किए रहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर साइक पे आते हैं तो साइक का सर पहले अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं टीएटी का, और फिर डब्ल्यूएटी और एसआरटी और एचडी में वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि किस तरीके से कैसे फ्रेम करना है, और उसके बाद डोजियर करवाते हैं, उसका पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं। और ये अच्छा एक है कि ऑनलाइन में भी सेम प्रेशर फील होता है जैसे एसएसबी में होता है। और सर कुछ डब्ल्यूएटी से रिलेटेड असाइनमेंट्स वगैरह और डब्ल्यूएटी अस्त्र वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप मतलब काफ़ी हेल्प मिलता है साइक में। और फिर आ जाते हैं जीडीओ की तरफ। तो जीडीओ में सर जीडी वगैरह काफ़ी अच्छे से करवाते हैं, आपके मिस्टेक्स वगैरह पॉइंट आउट करवाएंगे, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। और उसके बाद 3D मॉडल से स्ट्रक्चर्स वगैरह समझाते हैं बहुत अच्छे से, मतलब कम कम स्ट्रक्चर्स ही होते हैं लेकिन वो वर्थ इट होते हैं। उसी से आपको मतलब बेसिक पूरा नॉलेज या आइडिया हो जाएगा, जिससे आप अच्छे खासे लेवल के पीजीटी हैंडल कर सकते हैं वहाँ पे। और काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस भी उनके रहते हैं। और फिर लेक्चरेट पर आते हैं तो लेक्चरेट के काफ़ी अच्छे सेशंस कंडक्ट करवाते हैं आपको, मतलब लाइव कंडक्शन होता है, कहाँ पे लैग करते हैं, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है, वो सब बताते हैं आपके। और फिर लेक्चरेट वगैरह के टॉपिक्स जो रिसेंट में आए हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं सर प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे अच्छा ये कि जीडी और लेक्चरेट सर अपने मन से करवाते हैं, कभी भी मतलब पहले से बताते नहीं हैं, तो प्रेशर काफ़ी रहता है। और बाकी तो जीपी, हाँ जीपी भी सर काफ़ी अच्छे से करवाते हैं, मतलब कम रहते हैं वो मॉडल्स वगैरह कम रहते हैं, मगर जो जानना रहता है मतलब जो नेसेसरी रहता है जानना वो सब कवर कर लेते हैं सर कम जीपी मॉडल्स में ही। और उसके बाद आते हैं इंटरव्यू पर। तो इंटरव्यू भी सर 2 करवाते हैं। पहला इंटरव्यू मतलब प्रेशर कम थोड़ा-सा रहता है, दूसरे में काफ़ी प्रेशर देते हैं। उसके बाद सर जो आप जहाँ-जहाँ पर वीक हैं वो एरियाज़ आपको बताते हैं, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसे और क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने पर्सनैलिटी को और अपने पर्सनल इंटरव्यू में और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सभी सर बतलाते हैं। और उसके बाद मतलब ओवरऑल वर्थ इट बैच रहेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और सिर्फ एसएसबी का नहीं, ओवरऑल कहीं से भी कुछ भी डाउट हो वो सर से आप पूछ सकते हैं।